बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आज हम परसेंटेज के बारे में बात करेंगे। टुडे वी विल टॉक अबाउट हाउ टू फाइंड आउट द परसेंटेज of a number. For example, there is a number, you have a number 70 with you, so you have to find out the 5% of 70. So how will you find this out? आपके पास एक नंबर है 70, आप इसका 5% मालूम करना चाहते हैं, तो आप कैसे मालूम करेंगे? इसी मेथड को हम डिस्कस करेंगे कि 70 का 5% मालूम करना है, तो आपने 70 को 5 से मल्टीप्लाई कर देना है और डिवाइड कर देना है 100 से। तो 70 का 5% आपके पास आ जाएगा, जो कि होगा 4 बल्कि वो होगा 3.5 क्योंकि 7 डिवाइडेड बाई 2 होगा, ये 3.5 आएगा। तो 70 का 5% जो है वो 3/3.5 है। इसी तरह कोई और नंबर ले लेते हैं हम। फॉर एग्ज़ाम्पल हम लेते हैं जनाब 200 का 10% मालूम करना है आपने। तो 200 का 10% आपने मालूम करना है। So you have 200 with you. Now you have to find out the 10% of 200. तो आप क्या करोगे? इसको 10 से मल्टीप्लाई करोगे और 100 से डिवाइड कर दोगे, तो 10% of 200 आ जाएगा, जो कि होगा 20. So 20 is the 10% of 200. तो this is the method to find out the percentage of any given number. For example, you have a number 3, you have a number for example you have a number 372. You have to find out the 10% of this number. So what will you do? You will multiply this number with 10 and divide it by 100. So you will easily find out the percentage. This is 10, 37.2. 37.2 is the 10% of 372. So hopefully the students, you will get the idea that how to find out the percentage of any number. तो इस तरह से आप परसेंटेज किसी भी नंबर की मालूम कर सकते हैं। तो होपफुली ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। और परसेंटेज की मज़ीद क्वेश्चन जो हैं वो भी आपको करवाऊँगा, जिसमें कि यू हैव ए multiple problems. For example, you have word problems. So how to solve the word problems of percentage, I will also elaborate that soon in future. So kindly share this video with your friends, and please subscribe to my channel as well. Thanks for watching this.